Hello students, welcome to the next lecture on the complex analysis. Today I will explain you in details what are the various properties of the logarithmic functions for the complex variable. Myself Dr. Harish Garg, you can follow and subscribe my YouTube channel. What we have discussed so far, we have defined the concept of the standard logarithmic function. Here I am using the word standard. Why? I will explain you, just wait for the 2 minutes. Fine. Basically what we have discussed in our last lecture, which is related to the logarithmic functions, you can see the playlist of the complex analysis. Find logarithmic function, hyperbolic, trigonometric functions, exponential and many more lecture in this playlist. वहां पे हमने क्या सीखा था? We have seen there are the two kind of the logarithmic function. One is called as the log of a small log and second is the capital log. Fine. Where the small log is called as the standard logarithmic function. Fine. यही सीखा था हमने. And capital log is known as the principal value of the logarithmic function. Fine. और called as the principal logarithmic function. फाइन. इन दोनों में डिफरेंस जो हमने वो डिटेल में इस लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था. ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, हाइपरबोलिक फंक्शंस एंड द लॉगरिथमिक फंक्शंस. आप देखना चाहो दोबारा से देख सकते हो फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टुडेस लेक्चर. फाइन. हियर द स्मॉल ARG, फाइन, स्मॉल ARG इज नोन एज द argument of the complex number, argument of the complex number, and capital ARG is known as the principal argument of the complex number. यहां तक हमने लास्ट लेक्चर में डिफाइन कर दिया था. क्लियर? नाउ since because the small ARG is dependent on the n and n has infinitely many values, therefore I can say that small ARG has infinitely many values. अगर small ARG आपका infinitely many values है, that means the log of z is also has the infinitely many values. Moreover, for any complex number z which is defined as x plus iota y, how we can define the argument? I can define this number is tan inverse y over x, or instead of the small arg I call as a principal argument. Fine. But if I choose the z is my 0, I can written as 0 plus iota times 0. So can you define ARG, that is the argument? Clearly say 0 by 0 is not defined. So once the capital ARG, that is the principal argument, is not defined, it implies small ARG of z is not defined. Once the value of the small ARG is not defined, that means the logarithm of the z is not defined whenever z is my 0. Clear? Now another thing is, because the small ARG or the log of z has infinitely many values, if I choose the particular value of the n is my 0, fine, that it means if n is my 0, that means the small ARG has the single value. Fine, because n is my 0 and that value is called as the principal value of the logarithmic functions. Whenever you take n is 0, then we call as the principal value of the logarithmic functions. Make sure students, the principal value of the logarithmic function is denoted by capital LOG. Fine. Or it is also denoted by capital L into n. Ln is called as this principal value of the logarithmic function. Here theta, that is called as the principal argument of the z, which is defined as tan inverse y over x, where x and y are my real numbers defined as z is equal to x plus iota y. And because these are the principal argument, we can define this number is from minus pi to plus pi. Fine. For more detail about the modulus and the argument, you must watch about my previous lectures related to the modulus and the arguments. What are the various properties, what are the various examples, and the concept of the modulus and principal argument. Now, this definition, capital LOG, is called as the principal value of the argument. Now, if you write the z in terms of the polar form like r e raised to power iota theta, then you can define the principal value is, if you take the logarithm
capital log is ln of r plus iota theta, and make sure theta must lies between minus pi is the open interval, pi is my closed interval. Now, what are the difference between the standard logarithmic functions and the principal value of the logarithmic functions? So by using the definitions for any non-zero complex number, fine. If I open this bracket, it's a ln of z plus I can write as a iota times, I can write as a arg firstly, plus iota times 2 and pi. So can you tell me what is that? जहां पे कैपिटल ARG आ गया हो, that we call as the principal value of the z plus 2 and pi, and that is the relation between the standard logarithmic functions and the principal value of the logarithmic functions. Clearly say, if you take n is my 0, fine, then log of z and the principal value of the log z both are my same. Clear? Moreover, if you choose the real numbers, if you choose any positive real number, let's say x is my real number, fine, मतलब हम किस पे चले गए, हम real analysis में, and we all knows in the real analysis either you can write as a capital log x or you can write as a small ln log x, both are my same. Why? Because whenever x is my real number, positive real numbers, can you find the argument of the z? If x is a positive real number, that means y will be 0. That means the tan inverse y over x, that is my 0. Fine. So in that case, the argument will be my 0. So you can see log of x and log of are my same. तो इसलिए कहा जाता है लोगरिथम रियल एनालिसिस में चाहे आप log of x लिखो चाहे ln of x लिखो, both are the same. Now, what are the various properties of the logarithm functions? First of all, remember students, whenever we studied the real analysis में logarithmic की क्या properties थी? Yes, anybody? The real analysis is log of m plus log of n. It is equal to log of mn. Second property क्या थी आपके पास? Log of m minus log of n, which is equal to log of m over n. और थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी आपके पास? अगर आपके पास x is any real number, n is my integer, then you can write this number is n log of x. Fine. This is always hold in the real analysis. But right now in the complex variable, आपके पास log के कितने functions हैं? दो function है ना आपके पास, एक principal value of the logarithm और एक standard logarithm. Now can we say these both? Can we say both the logarithmic functions satisfied these properties? Both these logarithmic functions satisfied my these properties or not? क्या ये satisfied करेगा? Fine, and that is the objective of these properties. तो सबसे पहले हम start करते हैं small standard function of the logarithmic. If you have any two non-zero complex numbers, then we can define the log of z1, z2 and so on. Fine. अगर आप n integer की बात कर रहे हो, then we can say log of z1 over n is n times log of z1. Can we say these property hold? Fine. So can we say, yes, it holds. Small log, that's a standard logarithmic function, hold this property. Fine. Proof is a very simple. Fine. I can use the definition of the log of z. क्या थी log of z की? If I write for you ln of z plus iota times, because it's a standard logarithmic function, I call as the argument of the z. Fine. So I can start from the right hand side. What is the right hand side is log of z1 plus log of z2. If I substitute the value of the log of z1, it is a ln of modulus of z1 plus iota times argument of the z1, plus I can apply the definition of the log of z2 again. It's a ln of mod of z2 plus so. Fine. Now, because if I have z is x plus iota y, can you tell me what is the mod of z? Mod of z is under root of x square plus y square, and clearly say this mod of z is my real number. Fine. ये real number ही होता है, and once this is a real number,
by using the property of the one of the real analysis, log m plus log n is equal to log of mn. I can use this property, log of m plus log of n. How you can write this? A log of mn. फाइन. अगर आप ये सोचो, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, log of m. फाइन. एंड बाय यूजिंग द मॉडुलस प्रॉपर्टी, ये वैल्यू किसकी इक्वल होती है आपके पास? आई कैन राइट दिस नंबर इज फाइन. तो मैंने ये लिख दिया, प्लस आयोटा टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ z1 plus argument of z2. Now by using the property of the argument of m plus argument of the n, which is equal to argument of the m into n. Fine. So again मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, z1 into z2 plus iota times argument of z1 into z2. तो ये किसकी डेफिनेशन बन गई आपके पास? क्या ये इसकी डेफिनेशन नहीं बन गई, log of z1 z2 की? फाइन. बिकॉज इसको क्या लिखोगे, ln of absolute value plus iota times this part. Fine. So this is my left hand side. Clear? Similarly, for the second part, we can start with the negative sign. Fine. Again, because log of z mod of z1 both are real numbers, I can use the property of the logarithmic. Fine. z2. Similarly, it's the iota times argument of z1 and minus argument of z2. I can write as z1 divided by z2. For more details, as I mentioned you can watch this lecture, properties of the modulus argument. तो ये किसके इक्वल बन गया आपके पास, log of z1 divided by z2 is the required proof of the second part. Now the question arises is, can we say this property holds for principal argument of the log? The answer is no. It is not necessary that they will satisfy the properties. So अगर ये satisfy नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी? Let me give you the one example. Let us consider z1 is my 1, fine, and z2 is my -1, fine. और आप दोनों को माइनस ले लो, आप चॉइस आपकी है, जो आप लेना चाहते हो, फाइन. तो मैंने पहला केस ले लिया, दोनों को नेगेटिव. तो देयरफॉर आपको चाहिए z1 इंटू z2, ये कितना हो जाएगा, +1. फाइन. अब आपको कैपिटल लॉग लगाना ना, पहले मैं कैपिटल लॉग का फॉर्मूला ऊपर लिख दे रहा हूं. क्या चाहिए आपको, ln ऑफ mod of z प्लस आयोटा टाइम्स प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ द z. तो क्या आप प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकाल सकते हो z का? z1 का निकाल लेते हैं. z1 की वैल्यू कितनी है, -1. इट लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट. फाइन. -1 को ऐसा लिखा जाएगा ना, -1 प्लस आयोटा. तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका एंगल कितना हो गया, पाई. Similarly, what is the argument of the z2? -1 again lies on the second quadrant. Its answer is pi. And can you find the argument of z1 into z2? ये वैल्यू कितनी है आपके पास, +1, and +1 lies on the first quadrant. Argument is my 0. Clear? तो जैसे ही आपके पास ये arguments निकल गए, then you can find the value of the log, capital log z1, capital log z2, and capital log z1 z2. So by the definition, I can say this is a log of z1 plus iota times principal argument of the z1. If I substitute the value, what is the mod of z1? 1. Log of 1 is 0 plus argument of the z1 is pi. First answer is pi iota. Similarly, modulus of the z1 is 0. Argument is my pi. So second answer is my again pi iota. Third answer is 0. Argument is my 0. So the answer is 0. Fine. And clearly say the 0 is not equal to pi iota plus pi iota. Therefore, the first condition not hold. Similarly, for the second case, I can choose another example, because ये example इसको तो satisfy कर ही जाएगी ना, because 0 is equal to pi iota minus pi iota. बट हमेशा नहीं सेटिस्फाई करती, उसके लिए मैं अलग एग्जांपल ले लेता हूँ. a को मैं -1 ले लेता हूँ, a को माइनस आयोटा. तो आपके पास z1 डिवाइडेड बाय z2 कितना हो गया, 1 ओवर आयोटा. 1 ओवर आयोटा को रेशनलाइज करोगे तो दैट विल बी माइनस आयोटा. अगेन
आपको आर्गुमेंट निकालना है Z1 का, आपको आर्गुमेंट निकालना है Z2 का, और आर्गुमेंट निकालना है आपको रेशो का। फाइन, तो कितना आ गया? पहले -1, माइनस वाई लाइन इज द सेकेंड कोऑर्डिनेट से पाई, माइनस आयोटा कहाँ पे लाई करेगा? माइनस आयोटा को क्या लिख सकते हैं? 0, -1। फाइन, तो यहाँ पे आंसर कितना आपका 3π/2। लेकिन आपका आर्गुमेंट जो है वो कहाँ कहाँ लाई करता है? आर्गुमेंट लाइज इन द ओपन इंटरवल -π to +π। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना, 3π/2 को क्या लिख सकता हूँ मैं? -π/2। ठीक है, रिवर्स क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चला लो आप। दिस नंबर इज माई -π/2। तो ये माइनस आयोटा है फिर से, तो इसका आंसर भी -π/2 हो गया। तो आपके पास कैपिटल लॉग ऑफ Z1 कितना हो गया? कैपिटल लॉग मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू log 1 इज 0, फाइन, प्लस iota times pi, so that is a pi iota. Similarly, log of Z2, log of Z2 कितना हो जाएगा? iota 0, तो -π/2 iota. Capital log of Z1 divided by Z2, 0, because इसका absolute value भी 1 आ जाएगी, 0 and -π/2 iota. And clearly say left hand side is my -π/2 iota, right hand side is my pi iota, and it's a minus minus plus π/2 iota, which are not satisfied. Therefore, the relation is not satisfied. Fine. तो ये अब क्वेश्चन ये उठता है, ये रिलेशन कब सेटिस्फाइड करेंगे? फाइन, दिस रिलेशन होल्ड्स अंडर सम स्पेशल कंडीशंस। तो एक स्पेशल कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो भी ये डिफरेंस है, फाइन, इन दोनों का लोगरिथम का जो आर्गुमेंट का डिफरेंस आएगा, आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2, फाइन, इट मस्ट लाइज बिटवीन द -π to +π। लेकिन अब यहां देखो, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है आर्गुमेंट का? फाइन, और यहां से देख लो, इन दोनों के आर्गुमेंट का डिफरेंस कितना आ रहा है? 3π/2। So does it lies between -π to +π? Fine. Another thing, these identities are hold, both the identities are hold only if you taken real part of the Z1 is a positive, real part of the Z2 is my positive. अगर ये दोनों कंडीशन होल्ड होती है, then only you can say the logarithm of the Z1 into Z2 is logarithm of Z1 plus logarithm of Z2. लेकिन अभी हमने इसके लिए पहले वाले के लिए एग्जांपल क्या लिया था? हमने बोथ दी नंबर्स हमने क्या लिए थे? -1। तो आप खुद ही देख सकते हो, रियल पार्ट ऑफ दी Z1 इज लेस देन 0। सेटिस्फाइड नहीं हुआ ना, तो इसीलिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं हुई। So proof is a very simple. I can start with the definition of the log of Z1, which is equal to ln of modulus Z1 plus iota times capital ARG of Z1. Similarly, we can start with the log of Z1, Z2 and so on. जैसे आपका रियल पार्ट ऑफ द Z1 इज पॉजिटिव, इसका आंसर यहां कहीं होगा, रियल पार्ट, दैट मीन्स इट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट or it lies in the fourth quadrant. That means you can see it lies only in the right half of the complex plane. Fine. तो जैसे आपका राइट हाफ ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन में लाई करेगा, तो आपका आर्गुमेंट कितना हो जाएगा? दिस वैल्यू विल बी -π/2 और दिस वैल्यू इज +π/2। तो आपका एंगल जो है वो ज्यादा से ज्यादा π/2 हो सकता है और मिनिमम -π/2 हो सकता है। इसका मतलब आपका जो आर्गुमेंट है, that lies argument of the Z1 and argument of the Z2, both are lies between -π/2 to +π/2। और जैसे ही ऐड कर दोगे, these values are lies between -π to +π। और जैसे ही -π से +π में कोई चीज लाई करती है, हमारे दिमाग में वो क्या चीज आ जाती है? दैट इज द प्रिंसिपल आर्गुमेंट। फाइन, और यही इसका आंसर है। अगर कोई वैल्यू -π से +π में, इसका मतलब आर्गुमेंट विल गिव द यूनिक आंसर। फाइन, और अगर आर्गुमेंट इसका यूनिक आंसर दे रहा है और इसका सम -π से π में है, तो एक ना एक वैल्यू इसकी आर्गुमेंट में मैच हो जाएगी, बिकॉज इट हैज यूनिक वैल्यू। फाइन, so therefore we can say the argument of the Z1 plus Z2 is argument of Z1 into Z2।
फाइन, अब आप बाय डेफिनेशन से स्टार्ट कर लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दैट विल गिव यू द राइट प्रूफ ऑफ द रिजल्ट। इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ ना, इस पार्ट को, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ln of z1 plus ln of z2। why? because mod of z1 and mod of z2 are my real numbers, और अगर रियल नंबर हैं then I can write as a log of mn is log of m plus log of n। तो मैंने इसको अलग अलग कर लिया। The first part is my capital log of z1 and second is log of z2। नाउ अब हमने दो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, दैट इज अ log। अब इन दोनों में से इनवर्स कौन सा है? इनवर्स मतलब क्या मैं e की पावर स्मॉल log ऑफ z लिखूं तो आंसर z आएगा, और e की पावर में कैपिटल log लिखूं तो आंसर z आएगा। दोनों में से सही कौन सा है? फाइन, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, लेकिन दोनों की अपनी अपनी डोमेन है। फाइन, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट की बात करता हूं। लेट अस कंसीडर द z which belongs to the complete complex plane apart from the r negative। r negative is minus infinity to plus 0। फाइन, ये बेसिकली आपके पास ये क्या कह रहा है, आपका ये ब्रांच कट होता है बेसिकली। फाइन, वी विल डिस्कस द ब्रांच कट इन अवर नेक्स्ट पार्ट। अगर आपको रियली में चाहिए यू कैन सेंड मी द कमेंट बॉक्स, मैं आपके लिए ब्रांच कट ऑफ द लॉगरिथमिक फंक्शन एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पे फिल करते हैं log की वैल्यू ln ऑफ z, इसको अलग अलग लिख सकता हूं ना मैं, आयोटा टाइम्स capital ARG of heat। Find E of ln, they are complement to each other। Find E of iota, that is E of iota argument। Fine, तो इसको मैं इसको थीटा लिख लेता हूं। फाइन, वेयर थीटा इज माई आर्गुमेंट ऑफ द जेड। तो ये किसके इक्वल हो जाता है आपका, पोलर फॉर्म ही तो बन गई ना। जेड की पोलर फॉर्म क्या होती है, ई रेस्ट टू पावर आर आयोटा थीटा, वेयर आर क्या होता है आपके पास, आर इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द जेड। तो यू कैन सी ई ऑफ लॉग ऑफ जेड इज नथिंग बट द जेड। लेकिन ये कब हमेशा नहीं सेटिस्फाइड, फॉर ओनली दे आर सेटिस्फाइड व्हेन द डोमेन इज सी माइनस आर infinity, c minus r negative। Fine, so that means log of z is the inverse under the domain c minus infinity to 0। सेकेंडली, अगर आपकी डोमेन जो है वो कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर है लेकिन जीरो नहीं है, देन आई कैन स्टार्ट विद log of z। फाइन, log of z की डेफिनेशन क्या थी, ln of z प्लस आयोटा टाइम्स स्मॉल arg of z, एंड स्मॉल arg वैल्यू क्या थी, 2n पाई प्लस थीटा, वेयर थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास, कैपिटल ARG। फाइन, मैं इसको फिर से अलग अलग कर दे रहा हूं, इट इज en फाइन प्लस e रेस्ट पावर आयोटा 2n पाई प्लस थीटा, सॉरी बीच में प्लस नहीं आएगा, मल्टीप्लाई। फाइन, so this number will be mod of z and it's a e raised to power iota 2n pi plus theta। Fine, and we all knows e raised to power z is a periodic function with the period 2n pi iota। तो ये पीरियड ही तो बन गया ना इसका 2n pi iota। I can again write this number is e raised to power iota theta। तो ये फिर से क्या बन गया आपके पास, that is again my z। फाइन, और यू कैन सी अगर आप इसको अलग अलग से खोल के लिखोगे, दैट नंबर विल बी माई 1। आई कैन राइट दिस पार्ट इज cos ऑफ 2n पाई प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ 2n पाई। cos of 2n pi is my 1, sin of 2n pi is my 0। The answer is 1। So that means small log is also the inverse, but इसकी डोमेन क्या होनी चाहिए, कंप्लीट सी। फाइन, तो आप ये देखिए, अगर आप इस डोमेन में बात करते हो तो आप ये नहीं कह सकते e ऑफ द log z इज इक्वल टू z। अगर आपके पास जो डोमेन है z की वो c माइनस आर नेगेटिव है तो ये नहीं होगा। फाइन, देखिए देखिए ना, इसमें कुछ पॉइंट आपने आपने क्या करा, रियल लाइन में से ये वाली लाइन आपने माइनस कर दी। फाइन, ये आपने अगर माइनस कर दिया हो देन ओनली द कैपिटल log इज द इनवर्स ऑफ द फंक्शन e रेज़ पावर z। तो इसका मतलब क्या हुआ, वेन एवर यू हैव अ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर ई, बिकॉज नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो डोमेन क्या होगी इसकी, कंप्लीट सी। एंड वेन एवर इट्स अ कंप्लीट सी, एलओजी एक्सपोनेंशियल ऑफ द एलओजी इज माई जेड। फाइन, बट
log of e raised to power z is not equal to z. Fine, or in the sense you can say log of e raised to power z is not z. Why? Because e raised to power z is periodic function. फाइन, लेकिन अगर आप याद रखो रियल एनालिसिस में क्या होता था आपके पास, whenever you have the real analysis, then log of e raised to power x you can write as a x. Why? Because उस केस में ex is not periodic. फाइन फाइन, और यहाँ पे ex e raised to power z is a periodic होता है, उसका पीरियड कितना होता है periodic function का? Period is 2 pi iota, or in journal you can say 2n pi iota. So that's why I have written as z plus 2n pi iota. So अगर आपको रियल कार्टेशियन फॉर्म है z is equal to x plus iota y, you can define the e raised to power z is e raised to power x plus into e raised to power iota y. Fine, if you take on the modulus, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1, so that means the real component here. Fine, so if you define again by using the definition of the log of z, which is log of modulus plus iota times 2n pi plus capital ARG of the z. Fine, fine, तो what is the modulus of this z? E raised to power z, तो ये कितना हो गया e की power x and so on. अब because e raised to power x, this is the real number and it is not periodic. अगर ये periodic नहीं है तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? x लिख सकता हूं ना. फाइन, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो नहीं लिख सकते आप, लेकिन ये रियल है, देन आई कैन राइट एज ए x. इफ आई ओपन दिस ब्रैकेट xy plus 2n pi iota, and what is the value of the x plus iota y? That is z plus 2n pi iota is the right proof of the result. Now if somebody will ask you calculate the value of e raised to power log of z, fine, and log of e raised to power z. Fine, so clearly say e raised to power log z, because it's a log and log is the inverse function, that is my z, and z is given to be 4 iota. But how you can find this number is because e raised to power z is my periodic functions, I can write as 2n pi iota, and the value of the z is my 4 iota plus 2n pi iota is the right answer of the problem. Fine, 4 iota plus 2n pi, where n is my integers. Clear? Okay, अगर आपसे कोई इसमें से ये पूछ ले calculate the value of log of 4 iota, so clearly say this is not equal to z, because log e की power log z, ये आपका z कब होगा? Only when z डोमेन आपके पास ये गिवन होगी, लेकिन इसमें तो डोमेन गिवन नहीं है ना, that means z is my complete c. फाइन, z is my complete c, तो इस केस में ये चीज नहीं होगी आपके पास. फाइन, तो अगर आप चाहते हो नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन द ब्रांचेस ऑफ द लॉगरिथमिक फंक्शंस, देन you can send me the comment box, I will upload very soon for you. Till then you can subscribe my YouTube channel, share this video with your friends, like and comment on this video. Happy learning students, thanks for the watching.